Hello my pretties, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So today's video is about Zara sale haul. So I've ordered a few pieces from Zara. कुछ footwear order किया है, shirts order किया है, and trousers order and कुछ items अभी भी sale में होगा, so you can check them out. पहले मैं सोच रही थी कि हम थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते, थोड़ा सा मेकअप के बारे में बात कर लेते, because it's again been so long that we sat down and talked about makeup products. तो जल्दी से quick get ready with me भी कर लेते हैं. मुझे रेडी होना है. Let's just get ready here. Also guys, I got my hair colored. मैंने थोड़ा सा red streaks कराए हैं, which I was saying that I've got my hair colored again. Do this makeup look because उसका मुझे आपको haul भी दिखाना है, उसका मुझे reels भी shoot करनी है, कुछ looks भी shoot करनी है, and there's lots of work. मुझे फिर से थोड़े pimples आ रहे हैं. Also I'm getting फेस लेज़र डन. मुझे थोड़ी रेडनेस पिगमेंटेशन लगी है, वहाँ पे मैं लगा रही हूँ. फिर नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ग्लो के लिए. आप ऑर्डर दिस न्यू प्रोडक्ट. मैं इसको सिर्फ हाईलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई करूँगी. वी विल सी हाउ इट परफॉर्म्स. वाह. So as you can see, the coverage is pretty sheer as this works as a illuminator. बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है, but I would be needing a foundation. This is what the glow looks like. The foundation is done and look at this glow on my face. इतनी ज़्यादा कोई नीड है नहीं. आई मेकअप नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ बेस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो. तो आप आई मेकअप इंस्टाग्राम पे देख लेना, और अभी मैं आपको बेस करके दिखा देती हूँ. अच्छा सा ट्वी सा बेस. ब्लेंड दिस आउट. सबसे पहले मैंने ब्लश कर दिया. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको क्या पहले ब्लेंड करना है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं. So Arshiya and Miraya both are here, and अभी baby stop it. And come here Miraya, say hi. And I doubt कि अभी मैं ये complete कर पाऊँगी. Yes baby, see hi everybody. Hi everybody. So मुझे मेनली आपको एल्फ वाला वही दिखाना था, and the base is done. Yes baby. So this is how my base looks. And I'm sorry guys, अभी मैं नहीं कर पाऊंगी बोलने वाली वीडियो फिर. So let me set this base. Okay, so let me get this makeup done off camera and you stop it baby. वो look के साथ मैं वापस आती हूँ. Hi guys, so I am back. I did this Barbie makeup off camera and मैंने reel record कर दिया है, and this is what my base looks like to me. And this is the eye makeup. I've gone for very simple, subtle, pinky shimmery eyes, and थोड़ा सा मैंने कुछ ये rhinestones लगा लिए. On my lips I have the Mama Earth liquid lipstick, the new range which is called the Feather Light liquid lipsticks. This is what the packaging looks like, and the shade I have is called 07 Pink Orchid. So pretty. It's a perfect party pink, perfect for wedding. Yeah, I have some other shades as well. बहुत ही lightweight है, stay बहुत अच्छा है इनका, and बहुत देर से मैंने लगाया हुआ है. से मुझे 3-4 घंटे हो गए इसको लगाए हुए, बिकॉज आई डिड द हेयर स्टाइलिंग एज वेल, एंड बहुत अच्छे से यू कैन सी बिल्कुल बज नहीं हुआ है. एंड लेट्स डू द ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट एज वेल. सी, it's matte, it's transfer proof, it's lightweight, एंड मैंने कुछ खाया पिया भी तो बिल्कुल भी बच नहीं हुआ है. आपको सारे स्वॉचेस दे देती हूँ. ऑल्सो मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स. और आपको पता है मुझे कितनी पसंद है इनकी सारी लिपस्टिक की रेंजेस. टू शो यू गाइज ऑल द स्वॉचेस, एंड आपको शॉप करना होगा, यू कैन ऑलवेज यूज माई डिस्काउंट कूपन कोड which is Arshiya 2023 for 20% off at mama.in. मामा अर्थ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिल जाएंगे. इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी बहुत अच्छे थे. दिस हैज़ कोकोनट एंड विटामिन ई. काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है मुझे लिप्स पे. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई. एंड लेट मी शो यू द अदर शेड्स एज वेल.
So these lipsticks are dermatologically tested, made safe, certified, and perfect for everyday use. You get 5 nude shades, 2 reds and 1 pink, and I am swatching from 1 to 8. And you have a shade for every skin tone. They are so lightweight, light as air, feels like nothing on lip. एक जो शेड मुझे बहुत ही प्रिटी लगा इज दिस 105 न्यूड ब्राउन. गाइज मामा अर्थ के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लाइक द प्लांट्स गुड्स इनिशिएटिव. Whenever you shop from them, they link your order to a tree that they plant. They also have offline presence. Very pretty nudish brown shade and waterproof भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. Okay, so these are waterproof as well and see. So I recommend you guys definitely check these out. सारे links आपको description में मिल जाएंगे. Hi guys, so I'm finally done filming all the reels and now is the time to show you guys my Zara clothing haul. So first of all, let's start with this pink shirt. I've ordered 2 shirts. So this is what the first shirt looks like. So this is from the new collection. ये सेल में से नहीं है and this is a basic plain cotton shirt. And मेरे पास मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास पिंक ज़्यादा नहीं है. I have been loving colors a lot. कुछ टाइम से आई थिंक इतनी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक चला है. सो एंड आई फील कि मैं अच्छे से कैरी कर लेती हूँ. तो मुझे फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि मेरे पास पिंक है. अबाउट दिस वन एंड दिस इज एन ओवर साइज शर्ट. तो ये काफ़ी ढीली ढाली है. But I think I'm gonna keep it. Okay. So next I got this white shirt. Again a बहुत ही long oversized shirt है and the size is extra small. ये मैंने डिस्काउंट में लिया था. इसका ओरिजिनल प्राइस 1000. I think मुझे 2000 में मिला था. So this is what the shirt looks like. बहुत ही लंबी लेंथ है. I did something white और मुझे थोड़ा ऐसे कुर्ता स्टाइल में चाहिए था. मुझे इसके साथ लेगिंग्स या पैंट्स डालनी है white तो और मैं इसको ऐसे एलियन में भी यूज़ कर सकूँ तो उस पर्पस से मैंने ये लिया. इस अच्छी सी गोल्ड ज्वेलरी पहन के दिस इज गोइंग टू लुक फैब. Okay, next I have these joggers, jogging trousers. You can say this is from the new collection again 2290 है and this is what it looks like. जल्दी से आपको पहन के दिखाती हूँ. These are very comfortable and especially travel के लिए I like having these. बहुत सारे कलर्स अवेलेबल बट आई गॉट द ब्लैक वन. जल्दी से मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. ये मुझे यूज़ है एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस. ओके, सो आई गॉट 3-4 पेयर ऑफ फुटवेयर. 2 अभी लिए और 2 इससे पहले मैंने ऑर्डर किया था. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट वन लुक्स लाइक एंड इसका ओरिजिनल प्राइस है 3290. आई थिंक ये अगेन मुझे 2000 के आसपास मिला है. मेरी दिस इज व्हाट द स्लीपर्स लुक लाइक. गोल्डन है. एक मैंने गोल्डन ब्लैक भी ऑर्डर किया इसलिए मैंने गोल्डन स्लीपर्स भी ऑर्डर किए. ओके, इसके अलावा आई गॉट दीज ब्लू सैंडल्स एज वेल. स्लीपर्स मुझे ऐसे वाले फ्लैट स्लीपर्स पहनना बहुत पसंद है डेली वेयर में. सो या दिस इज व्हाट आई गॉट. आई थिंक मैंने बर्थडे के आसपास लिया था एंड अभी आई थिंक ये पे कुछ डिस्काउंट है फ्रेश मिल जाता. एंड देन आई गॉट दीज एंड यू कैन सी मैंने ऑलरेडी 2-3 बार पहन लिया है तो इनकी हालत थोड़ी ख़राब हुई है. बट या द डेनिम स्लीपर्स हील्स अगेन ये बहुत कंफर्टेबल है. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट एंड इस पे ये अगेन मैंने फ्रेश में लिया था बट अभी इस पे अच्छी ऑफर्स है. सो यू कैन चेक देम आउट अगर सोल्ड आउट नहीं हुआ आपका. And lastly, I have these beauties. I wanted to get pink heels क्योंकि मेरे पास नहीं थी. मैंने बहुत अच्छी देखी बट वो सोल्ड आउट हो गई. So I got these and ये टाई डिटेल भी है इसके साथ टाई करने के लिए and these are absolutely new. मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए पहना and this is what it looks like and I'm very excited इनको पहनने के लिए. So these were the 4 slippers and अभी मैं आपको जल्दी से बैग दिखाती हूँ अपना. This is the golden bag that I got. इसके साथ चेन भी है. ये भी चेन भी है एंड इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं. तो अपनी गोल्ड चप्पलें इस बैग के साथ के लिए मंगाई ताकि मैं दोनों को साथ में कैरी करूँ एंड मैं इसको वाइट के साथ जरूर पहनूँगी. ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है मुझे एंड एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. और ये भी मैंने ऑफ में किया. इसका ओरिजिनल प्राइस 2890. ये कितने में पड़ा था मुझे? आई थिंक 1800 का था ये, विच इज़ अ गुड प्राइस एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. लग्जरी बैग जैसा है. सरोजनी वाला आई डोंट थिंक लग रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा है. लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा था. ओके, लास्टली आई गॉट दिस पैर ऑफ ट्राउजर्स जो कि बहुत ज़्यादा
ऐसे लूज ट्राउजर्स पहनना अच्छा लगता है एंड आई हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स येलो कलर अ लॉट अभी कुछ दिनों से। दिस वॉज 4000 रुपीज़ एंड ये भी अगेन 2000 समथिंग में मिला मुझे एंड करना चाहिए था बट आई एम नॉट श्योर अभी। लेट्स ट्राई इट एंड सी मुझे रिटर्न करना है। सो या आई थिंक मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी दिखा दिया है ढंग से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू विश टू सी नेक्स्ट। अगर आपको ऐसे फैशन हॉल्स देखने हैं लेट मी नो, कोई आपको इंडियन सूट्स का देखना है, जो भी देखना है लेट मी नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर वीडियोज डालूँ और वही डालूँ जो आप लोग देखना चाहते हो। सो लेट मी नो एंड आई होप यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो एंड इफ यू डू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, subscribe to our channel if you haven't already. Okay, so outro थोड़ा सा blur हो गया, don't mind and I'll see you guys next time. Thanks for watching.